कि धनु राशि, द Sagittarius sign. Look at here. This is the sign, right? Now someone is picking the arrow in the hands, right? और जब ये एरो जाएगा, जब ये एरो चला जाएगा, कैसे अंदर घुसेगा बताइए? अगर किसी ने ये तीर चला दिया सामने से, तो कैसे अंदर जाएगा बताइए? How it will enter in the body? Can you imagine? Your Dhanu, wonderful. How this will enter in the body? Arrow will be entering in the body. How? Can you imagine? Bhedata. I will show you one image. Even I don't like this image, but still I will show you this image for understanding purpose. Look at here. तो ये तीर कैसे जाएगा हमारे बॉडी में? ये देखिए ऐसे जाएगा. Just for understanding purpose. I don't want to spread violence. Just for understanding purpose. This arrow will go like this. This is called Sagittarius. This is called sagittal axis. Okay. इसी को कहते हैं. Now, whether we put the arrow in the forehead or in the chest or in the abdomen or in the shoulder, anywhere it will go front to back. कहां से जाएगा? आगे से पीछे जाएगा. Front to back. Got it? So now we have seen this. We already have seen this. Where is our? I told you, शिवाजी महाराज की तलवार में जब इसे कट किया, इसके दो पार्ट हो गए. So from here only this will go. This will. This is the sagittal axis. ये कौन सी axis है? Sagittal axis. Now, on the sagittal axis, we have to remember where is the space. Only there our axis will fall. Because now, whatever the movement, no, this is vertical, front to back. ये हमारी axis कहाँ है? ये front to back है. Let's see. हाँ, this sagittal है. We are talking about the sagittal. Explain. One minute. Yeah, share करना. Look at this. Explain. So, sagittal axis. The sagittal axis passes from front to back. आगे से पीछे की ओर जाएगी. ठीक है. अभी उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है? तो शोल्डर अबडक्शन एंड अडक्शन. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर अबडक्शन अडक्शन क्या होता है. ये है अबडक्शन, ये है अडक्शन, ये अबडक्शन, ये अडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे एक एक्सिस आगे से पीछे जाएगी. ठीक है. मतलब एक्सिस क्या होती है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहीं पे हमने रॉड घुसा दिया या कहीं पे हमने सलिया डाल दिया. ठीक है. तो वो उस जगह को फिक्स कर देगा. तो एक्सिस इधर से जाएगी तो वो शोल्डर को यहाँ से फिक्स कर देगी, तभी ये मूवमेंट होगी. So look at once again here. Suppose I have given this example. हमने ये example दिया. We have divided the body in the two half. हमने बॉडी को दो हाफ में डिवाइड किया. And sagittal axis will go like, जैसे कि धनुष चला दिया, धनुधारी ने धनुष चला दिया. This is the sagittal axis. Now movement is possible, only this movement. This. Only this movement is possible. Abduction, adduction, abduction, adduction. तो जब हम बोलते हैं कि abduction कहाँ होगा? Sagittal axis पर होगा. Look at once again. Suppose you are putting the arrow here, like this. It's going. Now I can just move my hand like this, right? Because this axis will allow the movement, abduction and adduction. It's very difficult if I want to move like this.
this because axis is going like very big rod is going from here. I want to bring my hand front, it will block the path. ये सामने से गई है ना, it will not allow. But there is no any problem if I am doing this movement. We can take one more example. कि हैंग वो होता है ना तार, कपड़े सुखाने का तार है ना, कपड़े सुखाने के तार में आपने कुछ कपड़े लटका दिए तो ऐसे से हिलते रहेंगे, हैंगर हैंगर. But if you want like this, it's difficult. So there is only lateral and medial movement is possible. So when we talk about the sagittal axis, तो धनुधारी की का धनुष आपकी बॉडी में गया, शोल्डर में चला गया. Now only lateral, only abduction and adduction is possible. Like if we talk about the legs, suppose someone is something coming here. So what movement we can do? We can do this movement. We can't do this movement. We can't do this movement. Because here is the rod, front to back. And very big rod. Big rod. But this movement is easy. So this axis will support for doing this movement. So this is called sagittal axis, right? So sagittal axis means the axis who is going front to back, any movement, abduction will happen on the sagittal axis. केवल sagittal axis में ही संभव होगा. Let's proceed ahead. मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको ये वीडियो एक दो बार और देखना होगा, तब समझ में आएगा ढंग से. Okay, we are trying to make this subject easy, but anyway, you have to see this. You have to repeat the video. Okay, so now let's move to the next axis. Yeah. Now frontal axis. Frontal axis passes from right to left और लेफ्ट टू राइट. मतलब यहां से पास होगी तो लेफ्ट में निकलेगी, या लेफ्ट में से पास होगी तो राइट में निकलेगी. ठीक है. So the movement which is occur around the frontal axis are shoulder flexion and extension. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि अभी ये हमारे साइड में से इधर की ओर गई अंदर. ठीक है. तो ये शोल्डर फ्लेक्शन हुआ और एक्सटेंशन हुआ. ठीक है. इसमें अबडक्शन एडक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारी मूवमेंट को. जब हम अबडक्शन करने जाएंगे, वो रॉड वहां पे फिक्स है, तो वो अबडक्शन को अलाउ ही नहीं करेगा. तो फ्रंटल एक्सिस कौन सी मोशन अलाउ करती है, कौन सी मूवमेंट को अलाउ करती है? सो द फ्रंटल एक्सिस अलाउइंग ओनली वन मूवमेंट व्हिच इज अ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर. तो पर्टिकुलरली शोल्डर जॉइंट के लिए दिस इज helping to move the shoulder into a flexion and in extension. So look at once again here कि जहां हमने अभी बात की थी, हमने बात की थी फ्रंटल प्लेन की. Frontal, we are talking about the frontal axis. So first come back to frontal plane. Okay. Frontal plane means we are dividing the front body from the back body. Okay. So all the axes are going from the division area only. Okay, this is the division. So let the axis pass from here. Right. So on the one side, front. Now why this axis is, because what is the purpose to divide the body in two parts? दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसकी मूवमेंट कराना है, right? So now we are dividing the body. Now we can see this movement is possible. Now we can take it front, we can take it back. This is called flexion. Okay. In the same way, this movement can be done.
यानी अब ये दोनों मूवमेंट पॉसिबल, बट देयर शुड बी समवन हु होल्ड दिस। जैसे दरवाजे को पकड़ के रखते हैं हिंज, तो बीच में कोई होल्ड करने वाला होना चाहिए। So we have made the frontal plane, but in the frontal plane, movement is possible due to frontal axis. So frontal axis is responsible for bringing the front part front and taking it back. Okay, even the back part. We can take the back part more back and bring front. So the movement is possible in the frontal axis. Let's see. Suppose if I'm talking about my shoulder, then I told you the frontal plane means slicing the body in the front and back. So one horizontal axis holding body. I can bring my hand front. I can take my hand back. That is called flexion, extension. Even same for the leg. I can bring my leg front. I can take my back my leg. So this movement is happening. Sometimes leg is going to the front side. Sometimes leg is going to the back side. So this movement is happening in the frontal axis. So frontal axis is the axis which is connecting right shoulder to the left shoulder. Right ear to the left ear. Right? Like this. Why? Because we have divided the body in the front and back. So we are holding from the center. Now do the movement. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Someone holding from the center. That is happening in the frontal axis. Let's see in this image. इस image में देखिए. You can see in this image how this is. Now, person want to bend the body front. Yes, can bend the body front. Person want to take the body back. Yes, can take the body back. हम आगे भी शरीर को मोड़ सकते हैं और पीछे भी मोड़ सकते हैं, यानी we will do this movement in the frontal axis. तो हमने दो एक्सिस की बात की, एक तो शिवाजी महाराज की तलवार, नहीं एक तो धनुर्धारी की तलवार जो आर पार चली गई है ना, जो आर पार चली गई थी, फ्रंट टू बैक. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द फ्रंट टू बैक एक्सिस. नाउ वी आर डिस्कसिंग right to left axis, that is called frontal axis. Only three axes are there, so we have to try to understand this concept. Now let's talk about the last axis. Now vertical axis. So the vertical axis which lies parallel to the line of gravity. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ ग्रेविटी कैसे पुल करती है. तो लाइन ऑफ ग्रेविटी हमें नीचे की ओर पुल करती है. तो वर्टिकल एक्सिस है वो ऊपर से जाएगी और नीचे की ओर जाएगी. तो ये हुई वो वर्टिकल एक्सिस हुई. तो it is also called as, it is passes from top to bottom. इसको हम longitudinal axis भी बोलते हैं. ठीक है. It lies perpendicular to the transverse plane. So the movement which is occur around the frontal axis are shoulder internal rotation, external rotation and trunk rotation. ठीक है. तो जो शोल्डर की मूवमेंट हो रही है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इट इज परफॉर्म अराउंड द फ्रंटल एक्सिस. पता चला. तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो पासेस होगी ऊपर से लेके नीचे की ओर. So now look at this example here. See, the purpose of all axes is only one: to hold the structure and doing the movement.
So we already have discussed this transverse plane, right? We already have discussed this transverse plane. I am making multiple slices. The question is, how will I hold these slices at one place? How will I hold these slices at one place? So I will pass one axis from the center. So this axis is, what is the possibility here? अब हम क्या कर सकते हैं? Now this axis, because of this axis, this can rotate. Definitely there is a not forward backward movement is not possible. Side movement is not possible. But rotation is possible. So this is called vertical axis. Simple vertical top to bottom. Like if you see the vertical axis, if you imagine the vertical axis in the human body, what we can do? In the vertical axis, we can rotate anything we are rotating. Rotation is possible. Like I'm rotating my head. Where I'm rotating? In the vertical axis. So only three axes we have to keep in our mind. The third and the last axis, that is called vertical axis. Vertical axis is holding this structure in the place. तो वर्टिकल एक्सिस का मतलब है इनको उनकी जगह होल्ड करके रखना ताकि ये रोटेशन किया जा सके. तो आप इस इमेज में देख सकते हैं. अब आप इस इमेज को देखिए वापस. In this image, you can see this is the vertical axis, how it's going top to bottom. आप देख सकते हैं कैसे ये ऊपर से नीचे जा रहा है. The purpose to hold this transverse slices. What movement is possible? Rotational movement is possible. Whether the internal rotation, trunk rotation, all the rotation. Rotation is possible. Look at me. I want to rotate my body. I want to rotate. Okay, so this rotation is possible. Not only this, any rotation is possible on the, someone is there in the center, so I can rotate. It's a holding. एक्सेस का मतलब है कि दरवाजे के हिंज जो पकड़ के रखें ताकि आप मूवमेंट को कर सकें. एनीथिंग यू आर डूइंग रोटेशन, that is vertical axis, right? I hope ये combination, I hope it's clear little, but I will tell you very frankly, if you are understood little, 50% means you are super intelligent. अगर आपको 50% भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक्सेस को समझने के लिए बड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी होती है, राइट? Fine. So thank you so much, everyone. We will be continuing the session tomorrow with a more discussion. Thank you so much, Nidhi. Thank you so much. See you tomorrow. Have a blessed day. Bye-bye. Recording stopped.